Drum brakes. State the classification of the brakes and the braking system. Drum brakes, internal expanding shoes or external expanding shoe brakes आणि DC brakes. हे ब्रेक्समधले मेन इम्पॉर्टंट काय म्हणतो आपण क्लासिफिकेशन आहे. मेजरली ड्रम ब्रेक आणि डिस्क ब्रेक. ड्रम ब्रेक्समध्ये इंटरनल ड्रम ब्रेक्स आणि एक्सटर्नल ड्रम ब्रेक्स. एक्सटर्नल ड्रम ब्रेक्स आपण रेसिंग कार्समध्ये बघतो, F1 वगैरे कार्समध्ये बघतो, आणि इंटरनल ड्रम ब्रेक्स आपण टू व्हीलरमध्ये बघतो जनरली आणि कदाचित स्कूटीमध्ये पण असते. त्यानंतर ऑपरेटिंग सिस्टीम ऑफ सच ब्रेक कॅन बी डिफाइंड बाय द फॉलोइंग टाइप्स. Mechanical braking system, hydraulic braking system, pneumatic braking system, vacuum braking system, electrical braking system, combined vacuum और electrical braking system. मतलब ब्रेकिंग सिस्टम के भी कुछ बहुत ज़्यादा टाइप नहीं पड़ते. मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, वैक्यूम, इलेक्ट्रॉनिक और कंबाइन करके भी ब्रेकिंग पड़ती है. तो ये कुछ हो गया हमारी ब्रेकिंग के टाइम. बाय द वे अब यहाँ पे क्या है, sketch and explain the chassis out of front and rear of front end, front engine, rear wheel drive. फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव मतलब इंजन फ्रंट पे रहेगा, बाद में प्रोपेलर शाफ्ट एंड एक्सल वगैरह रहेगा, और जो रोटेशन है या फिर ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो ड्राइव हमारे इंजन का वो देगी पीछे के टायर्स को या फिर पीछे के एक्सल को. रियर एक्सल पे यहाँ पे ड्राइव दिया है, यहाँ पे इंजन के बाद फ्लाईव्हील है. फ्लाईव्हील का काम है कि जो एक्स्ट्रा पावर जनरेट होती है उसको स्टोर करने का और फ्लक्चुएशन नहीं देने का वो पीछे. क्लच क्या काम करता है, क्लच ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट को अलग करने का और जोड़ने का दोनों काम क्लच करता है. उसके बाद ये ट्रांजिस्टर और गियर बॉक्स स्पीड कंट्रोल के लिए, गियर रेशो एडजस्ट करने के लिए हमें काम आता है. बहुत बढ़िया ओमकार. प्रोपेलर शाफ्ट डिफरेंट एक्चुअली जो टॉर्क ट्रांसमिट करता है फ्रॉम ट्रांसमीटर बॉक्स टू द रियर इंजन और डिफरेंशियल, वो काम करता है ये. बाद में वहाँ पे यूनिवर्सल जॉइंट्स लगते हैं प्रोपेलर शाफ्ट में. यूनिवर्सल जॉइंट्स यानी कि ऐसे जॉइंट जो हमें दो डिफरेंट एंगल्स पे हमारा ट्रांसमिट करने देते हैं, उनको बोलते हैं हम यूनिवर्सल जॉइंट्स. और पीछे जब ये जाता है डिफरेंशियल पे, तो डिफरेंशियल अपने को अलाउ करते हैं कि हम एक ही शाफ्ट के, एक ही एक्सल के दोनों साइड को डिफरेंट आरपीएम ले सके. यानी कि जब भी हम राइट टर्न मारेंगे तो राइट साइड का जो व्हील रहेगा वो स्लो रोटेट करेगा, और लेफ्ट साइड का जो व्हील रहेगा वो ज़्यादा जोर से रोटेट करेगा या फिर ज़्यादा आरपीएम के साथ रोटेट करेगा. वो ज़्यादा रोटेट करेगा बेसिकली, और अंदर का धीरे रोटेट करेगा, बाहर का तेज़ रोटेट करेगा, जिससे कि हम जो राइट एंगल टर्न दे रहे हैं किसी भी फोर व्हीलर से या फिर थ्री व्हीलर से भी, तो वो अच्छे से स्मूथली हो सके. बाद में स्टेट द फंक्शन ऑफ क्लच टू परमिट एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट ऑफ द गियर्स व्हेन द इंजन इज स्टेशनरी. मतलब इंजन जब भी चालू रहता है उस वक्त. एंड व्हेन द व्हीकल इज इन मोशन विदाउट डैमेजिंग द गियर व्हील्स. ओके, गियर चेंज करते वक्त हमारे गियर्स डैमेज हो सकते हैं अगर वो रोटेशन में रहेंगे, इसलिए क्लच हमें मदद करे उन दोनों को रोटेट करके. उसके बाद है क्लच का जो हमारा अगले काम है, क्लच हमें किससे मदद करता है कि टू ट्रांसमिट द इंजन पावर टू द रोड व्हील्स स्मूथली विदाउट शॉक एंड ट्रांसमिशन सिस्टम व्हाइल सेटिंग अप व्हीकल इन मोशन. मतलब क्लच हमें अलाउ करता है कि हमारी गाड़ी जब भी चल रही होती है उस वक्त भी हम इजीली स्मूथली गियर चेंज कर सके, तो उसमें मदद करता है क्लच. इसलिए जब भी क्लच खराब होता है तो आसानी से गियर नहीं चेंज कर पाते हम लोग, इसलिए क्लच हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है. और क्लच इस्तेमाल करते हुए अगर आप ठीक से गियर वगैरह चेंज करोगे तो आपकी गाड़ी का क्लच प्लेट जो रहता है वो कभी भी ख़राब नहीं होता. उसके बाद डायफ्रैगम टाइप क्लच है. मतलब क्लच का कुछ टाइप्स रहते हैं, उनमें से एक है डायफ्रैगम टाइप क्लच. डायफ्रैगम मतलब ऐसा करके प्लेट रहती है, और इस साइड को एक शाफ्ट रहता है और दूसरी साइड को भी एक शाफ्ट रहता है. तो क्लच प्लेट को जो है ना, जब भी हम प्रेस करते हैं तो प्रेशर प्लेट इसको प्रेस करती है ऐसा, तो ये सीधी हो जाती है. तो सीधी हो जाती है तो इसका उस साइड जो शाफ्ट रहता है वो उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है, और इस साइड का शाफ्ट के साथ तो कनेक्शन बना ही रहता है. ये पहले ऐसा था, अभी ऐसा बन गया, तो इसका इस साइड का जो शाफ्ट है उसके साथ का कनेक्शन टूट गया ना, तो वो इस तरह से काम करता है डायफ्रैगम टाइप क्लच. और वहाँ पे फ्लाईव्हील भी है. फ्लाईव्हील के बाद यहाँ पे प्रेशर प्लेट है, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट. ओके एंड ओके, आई अंडरस्टैंड.
In diaphragm clutch instead of helical spring, diaphragm type spring is used, which apply pressure on the pressure plate for engaging the clutch. The spring is either taper fingered type or ground type and is mounted on the pressure plate in the conical position of the spring. The clutch plate remains gripped between the flywheel and the pressure plate when the clutch pedal is depressed. The throw out of bearing moves towards the flywheel, pressing the center portion of the spring, which causes the ring to move backward. This removes the pressure of the pressure plate and the clutch is disengaged. बाय द वे आज कौन वार है व्हाट इज टुडे इज वेंसडे वेंसडे इसका मतलब कल थर्सडे है और थर्सडे को इधर लाइट नहीं आती दिक्कत है state various types of automobile bodies, closed cars, saloon, hatchback, coupe, limousine, open cars, sports, convertible, special style, estate cars, station wagon, transport vehicle, van, truck, articulated vehicles, bus, coach. Other type of bodies, tractor with articulated trailer, half body truck, dump truck, tanker, delivery truck. Okay. Explain with neat sketch Hotchkiss drive. Hotchkiss drive. Okay, the kiss. This is the simplest and most widely used of strings. Where it is snackle, frame, universal joint, propeller, sliding joint, gear shaft, universal joint, buell, pillow shaft, rear axle with casing, wheel spring. Leaf spring, okay, basically leaf spring is there. Hotchkiss drive springs are side sticking weight of the body, also the torque reaction, driving twist and sides as the propeller shaft is provided with two universal joints and also sliding joint. The spring is fixed rigidly in the middle of the rear axle. The load, the front end of the spring is fixed and the fixed to the frame, and other half of the spring is other in front of the spring due to the torsion of the spring deflects as shown in the figure and is taken up by the spring. Similarly, taken up by braking torque, the spring would deflect in the opposite direction and then the axle moves up and down load condition and thus the circular motion on the spring center, the propeller shaft motion. The center of the front of the image during this momentary axle and the length of the shaft is varying. This is provided by means of sliding joint in the propeller shaft. Okay, now I understand कि ये कैसे काम करता है. Function of the slip joint. When the rear wheel comes across the bump, the spring compresses and expands as the differential with the rear axle housing, and the wheel moves up and down. And this is down to change in angle and variation and length of the propeller shaft. This slip joint permits the effective length of the propeller shaft depending upon the road condition. If there is no joint will buckle or break. Necessity is used where two shafts are connected in an angle and to transfer the torque are used to transfer motion of varying angles. Okay. Constant mesh gearbox. Simplified diagram shown in figure connected आता है मेरे को ये न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक difference between pneumatic and hydraulic system. Hydraulic braking system and pneumatic braking system. The braking fluid used as working medium. Braking fluid. Compressed air is used as a working medium.
Simple in construction, less expensive, complicated in construction and expensive. Occupies less space as compared to air brakes, occupies more space as compared to hydraulic brakes. System is self-lubricating, its lubrication of mechanical parts. Bleeding is necessary. No need of bleeding. Increased braking effort but less power than air brakes. More power than hydraulic brakes. Low cost maintenance. Maintenance cost is high. Mostly used in passenger cars. Mostly used in heavy vehicles like buses and trucks. Okay, now I understand. Hi, hi. I'm seeing you after so many days. I mean, I guess it's been 3 to 4 days since we have talked last time. So, how was your day? And did you have dinner? State the need of the differential, explain the need switch off with the okay. You have a differential when vehicle is turning, taking turn, outer wheel will have to travel greater distance as compared to the inner wheel. The vehicle has solid rear axle only and no other device. There will be tendency to skid, hence wheel skidding is avoided by incorporating so mechanisms. I differential reduces the speed of the inner wheel and increases the speed of the outer wheel when vehicle is taking turn. At the same time, keep the speed of the rear wheel when going straight ahead. The arrangement differential gears are shown in finger, the crown finger, the crown, sun gear, planet gear, shaft. Hmm. Explain the working of rack and pinion gearbox with a neat sketch. Swivel pin, wishbone arm, stub axle, the tie rod arm, ball joint, tie rod, ball joint, rack, pinion, booth, tie rod, etc. Okay. The pinion runs in mesh with the guide that is connected to steering tie. Yes, yours. I had dinner. Yeah, I also had dinner. By the way, how was it? I mean, it was. Where are you from, by the way? I am from India, Maharashtra. Do you know Mumbai? Or maybe if you know Pune, I am from that area. Connected the steering rods, both the pinion reactive are helical gears. Helical gears draw smoother and quieter on operations than spur gear. Turning the steering wheel rotates the pinion and moves rack from side to side. Balls and rocket tire rods move along the steering and suspension mechanism is given by the reduction ratio. The value of the ratio depends on the size of the pinion. A small pinion gives light steering, but it requires me turn to the steering wheel or travel the lock to lock. Okay. Maruti Auto Wagoner, Swift Desire, i10. Okay, household type of gearboxes. Everyone uses rack and pinion type steering wheel. Okay. I'm in South Africa. In South Africa. Okay. So where are you from? You're from Pretoria, Cape Town, Johannesburg. I mean, I know some of the names.
What are you doing? Right now I'm studying. I'm studying of automobile engineering. The knowledge you need to build cars. Theoretical knowledge basically. Advantages of rack and pinion steering gearbox. Rack and pinion steering gearbox is simple in construction, economical, and easy to manufacture, and it is easy to operate with accuracy. Contact between steering rack and pinion is freely from play. Internal damping is maintained and minimal steering is required. Compact elasticity compact, so mostly used for front engine front wheel drive. The idler arm and immediate rod is not needed. Easy to limit steering rack travel and so steering angle. Mm, okay, okay. I understand something. So are you back? I asked you. Okay, yeah, I asked you in South Africa where are you from? And do you watch cricket? I think in India, cricket is basically a religion. So in India, everyone loves cricket. They are die-hard fans of the cricket. In South Africa, I guess it is much more like soccer, rugby, or maybe something else, football. Describe the pneumatic braking system with its sketch, reservoir, brake wall, accessories, and rotor wall compressor. I know that this ply tire, radial ply tire and cross ply tire. Plies are running radially straight. हाय 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 खाना खाया दिन कैसा था आज का piles are running radially straight from bed to bed stiffness of the tire is less stiffness of the tire is more it gives ultimate comfort for the speed of 55 km because the stiffness tire is less comfortable. Steering is harder, steering is easy, tire has front view over the road, tire is big over the road, pedal the tire has more braking grip. क्या 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 मॉडरेटर की रोज आती हूँ मॉडरेटर बना दो मतलब मॉडरेटर वो कैसे बनाते हैं ऐड एज अ मॉडरेटर आई एम गो टू प्ले गेम्स ओके बाय Brinda, I made you moderator, but what will you do now? No one is watching us. No, okay. वेट बाय द वे मॉडरेटर्स क्या क्या कर सकते हैं मेरे को कुछ आइडिया नहीं है मेरे को कुछ तो बताओ वेट वेट वेयर आर यू गॉन
हेलो, आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है, आवाज? हेलो। हेलो। अच्छा हुआ तेरा वादा। हाँ, अब आई। अच्छा, आवाज बंद हो गई, मेरे को मालूम नहीं है, ये पता नहीं क्यों बंद हो रही है आवाज अभी भी। आप मॉडरेटर हो ना, आप ही बंद कर रहे होगे, पता नहीं मेरे को। सो हाय, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ 2 मिनट के लिए? जो भी आप हो, सुन रहे हो। चला गया यार, किसी का लड़की होता ना तो अभी इतने जन देख रहे होते लाइव, क्या बोलूं। लेकिन ये तो मैं एक्सक्यूज बना रहा हूँ। चलो, बाय। ओके। ओके।